अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग मटन और सोया चंक्स मिक्स करके एक मसाला ग्रेवी करी बना रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और मज़ेदार रेसिपी है। चलिए देखते हैं आसानी से हम लोग नवाब्स किचन के स्टाइल में कैसे बनाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग सोया चंक्स को गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर पकने बाद उसको अलग करेंगे। सोया चंक्स को बॉइल वाटर से अलग करे बाद हम लोग इसको हल्के से ऑयल में भी भुनेंगे। पहले हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग बॉइल सोया चंक्स ऐड करेंगे। अब हम लोग रेसिपी का मेन प्रोसेस शुरू करेंगे। एज यूजुअल हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसी में हम लोग रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे, सिनेमन, कार्डमम और क्लोव्स। फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इसी गरम तेल में ऐड करेंगे। नेक्स्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट। नेक्स्ट स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिली ऐड करने बाद हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड टमाटोस डालेंगे। इसी वक्त हम लोग इसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर
और टर्मरिक पाउडर भी डालेंगे। इमीडिएटली हम लोग इसमें कोरिएंडर पाउडर भी ऐड करेंगे। टमाटोस अच्छी तरह बॉईल होते वक्त ही हम लोग इसमें अच्छी तरह वॉश करा हुआ गोश्त ऐड करेंगे। लिड क्लोज करने से पहले ही हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मीट अच्छी तरह बॉईल हो गए बाद हम लोग इसमें कोकोनट पाउडर और कैशू नट पाउडर भी ऐड करेंगे। इसी वक्त हम लोग इसमें पहले ही प्रिपेयर करा हुआ सोया चंक्स भी डाल देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह बॉईल होते वक्त ही हम लोग इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, ऑल स्पाइसेस पाउडर। फाइनली हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड मिंट और कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करेंगे। आज का ये डिफरेंट रेसिपी आप भी अपने घर पे कोशिश करिए और आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और एक ख़ास बात, हमारे टीम तक पहुंचने के लिए 786guardfood@gmail.com पर मेल करिए और भी वीडियोस देखिए और अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक सारी दुनिया के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।